Hello dear 10 ICC students. Now here we will be taking up the MCQs on absorption by roots chapter, and so let's start. In the process of osmosis in a cell, both protoplasm and cell wall act as a membrane. Only cell wall act as a membrane. Only outermost layer of protoplast act as a membrane. The entire protoplast act as a membrane. Okay, this is a good question. Over here, the entire protoplast act as a membrane will be the correct option, because you see the protoplast, जो हमारे प्रोटोप्लाज्म है उसकी जो कवरिंग है वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो वो एज अ मेम्ब्रेन काम करती है in the process of osmosis, because we need a selectively permeable membrane. Now, osmosis involves cell to cell movement of water through cortical cells, active absorption of water through roots, all of the above. This is the correct option. Plasma membrane controls passage of water only. Passage of water and solutes in and out of the cell. Yes, passage of water and solutes into the cell. No. Movement of cell contents out of the cell. No. In and out, both. No, it will be. The space between the cell wall and plasma membrane in a plasmolysed cell is filled with. अच्छा, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मोलाइज सेल होता है उनके बीच में जो सोल्यूशन होता है उसका नाम पूछ रहा है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक वाटर. तो ऑब्वियसली इट विल बी हाइपरटोनिक, क्योंकि उसको जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा गया तभी वो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हुआ. ठीक है. अच्छा, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सीड्स व्हेन सोक्ड इन वाटर imbibe in it because the osmotic pressure inside the seed is low, seed coat contains lot of salts, process of absorption occurs, and there are many vacuoles in the endosperm. No. So the process of absorption occurs. Yes, absorption के कारण ही imbibition हो रहा है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोसेस ऑफ एंडो ऑस्मोसिस स्टॉप्स when the water concentration become equal, when the solutions become isotonic. Yes. Marine fish when thrown under tap water burst because of एंडोऑस्मोसिस. देखिए, बर्स्टिंग का जो फिनोमेना है, स्वेलिंग का, बर्स्टिंग का, वो सब एंडोऑस्मोसिस की वजह से ही होता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस. ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन ऑफ suspended particles from lower to higher concentration, suspended particles from higher to lower concentration, so molecules of ions from the more concentrated solution to the less concentrated solution, solvent particles from the less concentrated solution to the more concentrated solution. water की movement होती है, solvent की movement होती है from less concentrated solution to more concentrated. This is the correct option. Water will be absorbed by the root hairs when concentration of solutes in the cell sap is high. Yes. When a plant wilts, the sequence of events will be as follows. Exoosmosis, प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, टेम्पररी विल्टिंग. इसको आपको एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, फिर प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है. ठीक है. फिर टेम्पररी और फिर परमानेंट विल्टिंग होती है. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ, व्हेन अ सेल इज fully turgid, which of the following will be 0? Yes, सक्शन प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी कहा जाता है उसको. ठीक है.
So this is 0. Thank you. I think this will be useful for you. You can just take a screenshot, and I think this will be helpful for you. Thank you very much. Keep sharing, keep watching. Thank you, children.